स्टूडेंट्स, आजकल हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं. तो एज यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द सेकंड वन इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन. तो आजकल हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं. तो इससे पहले हमने जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है वहां पे हमने एक इक्वेशन डिराइव की है जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. वो हमने डिराइव की है. तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है वो क्या निकली, वो इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वेयर के इज कांस्टेंट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है. when we put different values for x we will get corresponding value for y. ठीक है ना. जब हम उनको प्लॉट करते हैं we get a parabolic curve. So it means that wherever a projectile is projected it follows a parabolic path. ठीक है. तो ये सबसे पहले दिखाया गैलीलियो ने. जो प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है. ठीक है. तो अब हम we will now discuss some important terms. We will make ourselves familiar with certain important terms which are used to describe or to discuss projectile, horizontal projectile motion. Okay. वो terms क्या है? The number one, first term is, यहाँ पे हम दिखाएंगे. We will discuss such terms one by one. Some important terms. Number one is the time of flight. This is the first term. And then second term is there. Horizontal range. And the third term is velocity of the projectile. During projection. ठीक है. During projectile motion. Okay. We will discuss these terms one by one. These are very important terms so far as the horizontal projectile motion is concerned. ठीक है. We will discuss these terms one by one. Okay. First term is time of flight. ठीक है. Time of flight का मतलब क्या है? In here assume this is here the ground, surface of ground. Okay, or earth, and let's take a horizontal axis parallel to ground at certain height above the ground. Suppose height is h and this is x-axis. ठीक है. And draw another vertical axis. Suppose this is vertical axis. The two perpendicular axes meet each other at a point O, which is called the origin of the coordinate axis. This is the y-axis here. And now assume this O is at a height h above the surface of earth or above the ground. ठीक है. H is the height. Okay. And now let us assume the projectile somewhere here initially at the origin. As the projectile is we have assumed the projectile initially at the origin, therefore initial position x naught is 0, y naught is 0. Is this clear? Initial position coordinates. And now अब हम इसको यहाँ से फायर करेंगे in horizontal direction because we are dealing with the horizontal projectile motion with some velocity, initial velocity. Suppose this is the velocity u. ठीक है. This is the velocity with which we are throwing the projectile in the horizontal direction. Due to this velocity, what will happen with the projectile? It follows a parabolic path जो हमने पहले prove कर दिया है. Like this. This is the parabolic path. And then finally, hits the surface of Earth somewhere here. Suppose at point A. A is the point where it hits the surface of Earth. Okay? And now time of flight means the time during which the projectile remains in flight, remains in air. यानी कि the time taken by the projectile in going from point O to point A. Is this clear to you? O से लेकर A तक जाने में इस प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा
तो उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, या वो कैन से द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट और रिमेन्स इन एयर. Is this clear to you? This is called time of flight, and it is represented by capital T. Suppose T is time of flight. Okay? अब हम इसके लिए रिलेशन डिराइव करेंगे. टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस टाइम डिपेंड्स. टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स. ओके, एंड नाउ हियर वी विल कंसिडर वर्टिकल मोशन. ठीक है, कंसिडर vertical motion from O to A. What is O? O is the point of projection. ठीक है, जहां से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, थ्रो किया है in a horizontal direction. What is A? A is the point where the projectile first hits the ground. ठीक है, ये पहले यहाँ पे इसको हिट करता है विद द मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी. ओके, एंड नाउ तो अब जो टाइम लगेगा इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, ठीक है, उसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. अब यही वर्टिकल मोशन हम डिस्कस करेंगे. वी नो द पोजिशन, टाइम, position time relation in vertical direction from O to A. What is the position time relation? The position time relation is y minus y naught is equal to u y t plus half of a y t square. Okay. Here, what is y? Y is the final position. The final position is here. So what is the vertical final position, vertical distance? The vertical distance h. It is because the O is at a distance h, we can say at a height h from the point A, from the ground. Is this clear? So y का value यहाँ पे है, it is h. Is this clear? And now what is y naught? Y naught is the initial position. Initially the projectile is here at the point of at the origin O, and at the origin x naught is 0, y naught is 0. Therefore y naught is 0, क्योंकि origin से हमने इसको फायर कर दिया. And now what is uy? Uy is the velocity, initial velocity in vertical direction. जैसे कि हमने जो यहाँ पे जो vertical motion है, it is just like we are just releasing an object from the origin. यहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं, कोई velocity नहीं दे रहे in vertical direction. Horizontal जो horizontal projectile motion है, उसमें हम ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज, जैसे कि वर्टिकल मोशन, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन. वन इज वर्टिकल मोशन, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल मोशन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है. तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, जो हम इनिशियली हमने इसको जिस वेलोसिटी हमने इसको फायर कर दिया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इट इज जस्ट लाइक वी आर रिलीजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, जहां से जैसे कि हम रिलीज कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल motion. Is this clear? तो initially in vertical direction what is the velocity? It is 0. जो ये नीचे नीचे आ रहा है, इसकी जो vertical velocity है वो बढ़ रही है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है. And now what is the acceleration? Ay in vertical direction. It is acceleration due to gravity, because it is moving because of gravity. There is only one force, that is gravitational force acting on it. ठीक है, सो ये यहाँ से एक्सेलरेट हो रहा है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू g. देयरफॉर, एंड व्हाट इज t? दिस t इज टाइम ऑफ फ्लाइट. t इज कैपिटल T, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया. t इज टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पूरा हमने पूरी मोशन डिस्कस करनी है फ्रॉम O टू A वर्टिकल डायरेक्शन में. ठीक है, तो वहां पे पूरा टाइम आएगा t. देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज y के बदले आएगा h माइनस 0 इक्वल टू यू वाई के बदले भी 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई के बदले जी इंटू टी स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी स्क्वायर आएगा. एंड नाउ इट कैन बी रिटन एज एच इज इक्वल टू, ये 0 बनेगा, जहां से आएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, और वी कैन राइट एज टी स्क्वायर is equal to
ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा ट्वाइस h और g आएगा नीचे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दिस कैन बी रिटन एज t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइड बाई g. Is this clear? Now this relation shows that जो time of flight है, the time of flight depends directly on square root of h and depends inversely on what? Square root of g, and there is no factor of initial velocity, so it means that it does not depend upon the what? Velocity of projection. In horizontal projectile motion, the time of flight does not depend upon u. What is u? U is the initial velocity of projection. Is this clear? तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है. It depends on your h, height of the point of projection above the ground, and depends upon the g, acceleration due to gravity. Is this clear to you? It depends directly on square root of h. So it means that जितना h ज्यादा होगा, जितनी height ज्यादा होगी, उतना ही time of flight ज्यादा होगा. But it does not depend upon what? U. U पे depend नहीं कर रहा है. As it does not depend upon U, so it means that, so इसका मतलब ये हुआ, अगर एक प्रोजेक्टाइल हम प्रोजेक्ट करेंगे यहां से, सपोज हियर इट इज ग्राउंड, इसी तरह से दूसरी डायग्राम यहां पे बनाएंगे, ये यहां पे ग्राउंड है, ये यहां पे ग्राउंड है, ठीक है. तो ये दिस इज हियर ओरिजिन. तो यहां से हम फायर करेंगे एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है. यहां से हमने इनिशियल वेलोसिटी है u1, तो यहां पे हम इनिशियल वेलोसिटी देंगे इससे ज्यादा u2. ये बड़ा वेक्टर मैंने बना दिया, यहाँ छोटा वेक्टर. इज दिस क्लियर टू यू? ओके. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट इज सेम, सपोज हाइट इज सेम, हाइट इज सेम, इसमें भी वही हाइट है, इसमें भी वही हाइट है. अगर इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे विद दिस वेलोसिटी, इट हिट्स द सरफेस ऑफ अर्थ समवेयर हियर, ग्राउंड हियर एट पॉइंट ए. और अगर यहाँ पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी u2, जो इससे ज्यादा है, वो ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन? इट विल हिट द सरफेस ऑफ अर्थ, इट विल हिट द ग्राउंड समवेयर हियर, ठीक है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से इसने कवर किए है बहुत कम है, इस केस में ज्यादा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस a dash. Is this clear? Now in both the cases, what is time of flight? Time of flight remains same for this object and also for this object. यहाँ पे जो velocity है u1, यहाँ पे u2 है velocity, different velocity, इससे ज्यादा है, but time of flight पे कोई असर नहीं पड़ेगा. O से A तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, अब मान लीजिए इसको 2 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पे भी 2 सेकंड लगेंगे इसको. Is this clear? अगर यहाँ पे 3 सेकंड लग रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 सेकंड ही लगेंगे. It does not depend upon the initial velocity of the projectile. ठीक है, जो initial velocity होगी उस पर डिपेंड नहीं करेगा in case of horizontal projectile motion. ठीक है. ओके. इसी तरह से अगर हम यहाँ पे it also does not depend upon the mass. हमने देखा अभी जो time of flight है does not depend on what? Does not depend upon the mass of what? Mass of the projectile. वो उसका mass ज्यादा है या कम है, उस पर भी ये डिपेंड नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ, अगर लाइट ऑब्जेक्ट यहां से फायर करेंगे या हेवी ऑब्जेक्ट फायर करेंगे, ठीक है ना, दोनों के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो सेम होगा. इज दिस क्लियर? ये मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बता दिया. एंड नाउ वी विल डिराइव द सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज हॉरिजॉन्टल रेंज. Horizontal range. Horizontal range means the horizontal distance covered by the projectile. Is this clear to you? जो इसने horizontal distance cover की है during flight, वो हम represent करते हैं capital R से. So R is the horizontal range, means the vertical, this horizontal distance covered by the projectile in flight. Is this clear to you? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहां से वर्टिकल डिस्टेंस h है, अब ये कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज. इज दिस क्लियर? ओके. ये तो हम यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, कितनी वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ने कवर की है ड्यूरिंग फ्लाइट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी इसने कवर की है.
तो यहाँ पे जो हमें हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है तो हॉरिजॉन्टल मोशन ही डिस्कस कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कंसिडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम O to A, O to A हॉरिजॉन्टल मोशन हम कंसिडर करेंगे, वर्टिकल मोशन यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट को जाना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इज दिस क्लियर? ये है हॉरिजॉन्टल मोशन, इज दिस क्लियर? ओके, वी हैव द position time relation. What is position time relation? In horizontal direction, it is x minus x naught equal to uxt plus half of axt square. Is this clear? Okay. x naught is initial position. What is initial position here? यहाँ पे लिखेंगे पहले x is the final position, final distance in x direction, x, ठीक है ना? तो x का वैल्यू क्या आएगा? r, maximum distance, यानी कि maximum horizontal distance covered by the projectile in flight, it is called horizontal range. So x is r, this is clear? And now what is x naught? X naught is the initial position. Initially the projectile is where? At the origin, so x naught is 0. So what is ux? Means the velocity, initial velocity in horizontal direction. We have projected the projectile initially with initial velocity u. Therefore ux is u. This is in the horizontal direction, ठीक है ना? इसी ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो ux is u. Is this clear? Okay. What is ax? Acceleration. As in absence of air resistance, this u remains constant. ये initial velocity भी ये, final velocity भी ये होगी. In between भी कहीं पे भी यही velocity रहेगी. ये जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है, ठीक है? Horizontal velocity is constant. Therefore, there is no acceleration in horizontal direction. तो ax is 0. This will become x के बदले r minus 0. यहाँ पे ux के बदले ut प्लस ax से ये सारा 0 बनेगा, ये भी 0 आएगा, तो we can get here r is equal to, बस यहाँ पे एक और चीज लिखना है पहले, वो मैं भूल गया, जो टाइम इसको लगा t, o से a तक जाने में इसको टाइम लग रहा है t, वो t किसके बराबर है? वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, तो टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। इज दिस क्लियर? ओ से लेकर ए तक हमने हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस करनी है, तो वहां पे जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, वो कैपिटल टी से हमें रिप्रेजेंट करना है। देयरफॉर द अबव इक्वेशन बिकम्स एक्स के बदले आर लिखना है, माइनस एक्स नॉट 0, यू एक्स के बदले यू, ठीक है, टी स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस एक्स से सारा 0 ही बनेगा, तो 0 ही लिखेंगे। Is this clear? And now the range is equal to ut. We can write as u into t. What is t? T is time of flight, जिसके लिए हमने अभी relation derive की है, and that is equal to under root of 2h divided by g. Is this clear? So this is the final expression for the range. So this shows that range depends on initial velocity in horizontal direction, उस पर डिपेंड कर रहा है. It also depends upon the height of the what point of projection above the ground, ठीक है, and g is acceleration due to gravity. इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है. Is this clear? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर h ज्यादा होगा तो रेंज भी बढ़ेगा. जितनी हाइट, जितनी ज्यादा ऊपर से हम प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज भी बढ़ जाएगा. जितने हम इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा बढ़ा देंगे तो रेंज भी बढ़ जाएगा. इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. इज दिस क्लियर टू यू? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, इसी तरह से एंड नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच इज कॉल्ड
third important term, which is called velocity. यानी कि instantaneous velocity of the projectile during its flight. During its flight, जब ये फ्लाइट में होगा, किसी भी इन पॉइंट पे हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है. ठीक है? सपोज at any instant of time t, the projectile is at a point p x y. इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे जो प्रोजेक्टाइल है इट इज समवेयर हियर एट पॉइंट पी. यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स है, सपोज ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई ड्यूरिंग इट्स मोशन. ठीक है? एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी. ठीक है? ओके. अब यहाँ पे हमें बतानी है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेट वेलोसिटी. एज यू नो दैट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अंडर द combined effect of two independent perpendicular velocities. The projectile moves under the two perpendicular independent velocities जो हमने पहले ही बता दिया. ठीक है ना? Two perpendicular independent velocities. यहाँ पे एक है horizontal velocity in this direction which remains constant. जो initial velocity है वही final velocity भी है. In this direction Vx, and second is the vertical velocity. And the vertical velocity is a varying velocity. It is increasing continuously. Suppose here the vertical velocity is Vy and the horizontal velocity is Vx. These are the two velocities at this point, point P. ये point P हमने यहाँ पे लिया, point P पे. Is this clear to you? Okay. अब यहाँ पे हमें बतानी है resultant velocity. So we can calculate the resultant geometrically here. For that we will complete a parallelogram. This is the parallelogram here. ठीक है? यहाँ से हम diagonal draw करेंगे. जो यहाँ पे diagonal होगा वही represent करेगा net velocity, instantaneous velocity of the projectile. Suppose it is V. V is the instantaneous velocity of the projectile at point P. ठीक है? It is the vector sum of what? Vx and Vy. Vx and Vy be its two perpendicular components. Then the net velocity at point P of what? Of the projectile is given by जो net velocity होगी वो होगी vector sum of the two, that is Vx plus Vy. Is this clear? Okay. अब यहाँ पे खाली magnitude देखेंगे. The magnitude of the resultant velocity is equal to, because as the two are rectangular components of V, therefore the magnitude of the resultant velocity will be equal to Vx square plus Vy square. Is this clear? Vx square plus Vy square, because they are the rectangle perpendicular to each other. जो third term होगी वो 0 के बराबर होगी because of what? 90 angle cos 90 0 के बराबर होता है. तो V is equal to under of Vx square plus Vy square. Is this clear? Clear to number 1. Vx, what is Vx? Vx is the velocity at point P at instant of time t in horizontal direction. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी भी होगी, वो किसी भी पॉइंट पे भी वही वेलोसिटी होगी. सो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है या वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो चेंज नहीं हो जाएगी. इज दिस क्लियर टू यू? सो Vx इज u. एंड व्हाट अबाउट Vy? Vy इज अ वेरिएबल वेलोसिटी. कीप इट नंबर 2. ठीक है? दिस इज कांस्टेंट एवरीवेयर ड्यूरिंग द मोशन. व्हाट अबाउट Vy? Vy is the vertical velocity and it is a variable velocity. अब ये variable velocity को देखेंगे पहले. We have a relation in the velocity time relation is there. The velocity time relation is
velocity time relation in vertical direction. Vertical direction में देखेंगे velocity time relation. The velocity time relation is क्या है वो? That is vy minus uy is equal to ayt. This is velocity time relation. Okay. What is vy? Vy is the velocity at point P. That is vy. ठीक है, vy के ही बराबर है. What is uy? Uy is the initial velocity. Initial velocity in vertical direction is 0, as you know. What is ay? Ay is the acceleration due to gravity. It is gt is time at point P. That is t. Is this clear? uy क्या है? 0. क्यों? ये मैंने पहले ही बता दिया. It is the initial velocity in vertical direction. It is 0. उसके बाद ये बढ़ रही है from 0. ठीक है? Then finally it is the ground with maximum vertical velocity जो हमने इससे पहले बता दिया. So vy is equal to gt. gt के बराबर है vertical velocity. ठीक है? टाइम भी चेंज हो रहा है. g is constant. जैसा टाइम चेंज हो जाएगा उतनी वेलोसिटी भी बढ़ेगी. Is this clear? जितना टाइम होता जाएगा. Okay, using this second and third and first, what will you get? Using second and third and first, we get the instantaneous velocity of the projectile is equal to under root of vx के बदले u स्क्वायर आएगा यहाँ पे प्लस vy के बदले यहाँ पे आएगा g स्क्वायर t square, and this is the final velocity expression for the final velocity of what? Of the projectile. Instantaneous velocity. It is the instantaneous velocity. ठीक है? तो इसकी मदद से हम कहीं पे भी velocity बता सकते हैं net velocity क्या होगी. Is this clear? So it is equal to under root of u square plus g square t square. Is this clear? अब इसकी direction भी हम देख सकते हैं. Direction of the velocity. Okay, suppose it makes an angle alpha with what? With the horizontal axis or vx. Suppose vx के साथ ये alpha angle बना रहा है. Suppose alpha is the angle between v and vx. Vx is the horizontal component of the velocity v. Okay. Then tangent of alpha it will be equal to this alpha here. ये perpendicular होगा, ये फिर base बनेगा, and perpendicular is equal to vy. तो यहाँ पे आएगा vy divided by base is vx. Is this clear? So tangent alpha is equal to what is vy? अभी मैंने बता दिया it is gt के बराबर है. What is vx? Vx is the u, वो u के बराबर है. हर एक जगह पे u के बराबर है वो. There is no change in the horizontal velocity. So this is the expression for what? Direction of the instantaneous velocity of the projectile. Yeah, we can write as alpha is equal to tangent of inverse gt. ये हमें डायरेक्शन देगी जो प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी. इससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं किस डायरेक्शन में होगी वो वेलोसिटी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे. ठीक है? तो इससे हम मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं. इज दिस क्लियर टू यू? तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल मोशन हमने कंप्लीट कर दिया. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके बाद एंगुलर प्रोजेक्शन. ठीक है? टिल देन गुड बाय.